So today we are going to discuss about the DNA extraction method. How DNA is extracted in case of DNA fingerprinting. Whenever we get the, obviously, if we talk about the DNA, it means the biological sample. It indicates the biological sample. Whatever the biological sample we are obtaining at the crime scene, so whatever the biological material we are obtaining at the crime scene, first we have to go for the collection of the material biological. Then we have to isolate the DNA from it, so that we will be able to go for DNA fingerprinting. So as it's not, cell is having many components, rest of the DNA, like we are having many cellular proteins on which DNA is packed. We are having many cell organelles. So from all organelles or the packaging material which is present in the cell, we have to isolate our DNA. So we should be able to disrupt our cell membrane. Then from the cell membrane, while all the cell contents are in the lysis buffer, then we have to go for the separation of proteins from the DNA material. And even we have to remove inhibitors. There are some inhibitors, some enzymes which will be, or which will prevent, or which will reduce the rate of reaction of polymerase PCR, which will inhibit our PCR reaction amplification. So whatever the extraction process we are following, it should be having, it should be able to give the stable DNA. Second, it should be having high quality DNA. It should be having high quality DNA. So our goal is the DNA extraction. In DNA extraction process, our goal is the, first we will go for the cell lysis, then the separation of the DNA molecules from other cellular material. Then obviously via downstream processing, we have to isolate the DNA. Then we have to check for the quality and the quantity of DNA before proceeding for further analysis. जब भी हम लोग DNA लेते हैं, तब हमें क्या करना है, उसका क्वांटिटी चेक करनी है, क्वालिटी, before starting the DNA profiling. So whenever we are handling with the DNA, we have to be very specific with it, so that we should avoid the cross contamination between the sample and the environment, और between the samples, in between the sample. जब भी हम लोग एक sample ले रहे हैं DNA isolation के लिए, तब हमें इन बिटवीन सैम्पल्स के लिए क्या करना है, मतलब कंटामिनेट नहीं होना चाहिए, या जो हमारा बाहर का DNA कभी आ गया हमारे सैम्पल में, दैट विल लीव एम्बिग्यूटी इन द रिजल्ट्स. तो हमें ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है. इवन ऐसा देखा गया इन फॉरेंसिक लैब्स, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, वेन एवर देयर इज द सैम्पलिंग प्रोसेस जब हो जाता है, तो मोस्टली द साइंटिस्ट कैरी और सैम्पलिंग प्रोसेस, जैसे दो साइंटिस्ट अलग अलग क्राइम सीन पे काम कर रहे हैं, बट दे आर हैविंग वन लैब. वट दे डू, दे सेपरेट टाइम. सुबह के टाइम पे पापा तू तेरा DNA आइसोलेशन कर ले, शाम के टाइम पे मैं कर लेता हूँ. इवन सम टाइम दे सेपरेट देयर बेंचेस, वर्किंग बेंच जो उनके रहते हैं, वो वहाँ पर भी क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं कि नहीं हम लोग अलग अलग वर्क बेंच पर भी काम करेंगे, बिकॉज देयर आर मोस्टली चांसेस ऑफ कंटामिनेशन प्रोसेस. As we have studied till now, we are having different types of samples which can be used for the DNA profiling. Like we can use liquid blood, which we can obtain in the quantity of 2000 nanogram per ml to 4000 nanogram per ml. जब हम लोग सैम्पल कुछ भी एक ड्रॉप ले लेते हैं, मतलब सेमेन का कुछ पार्टिकल्स लेंगे या ब्लड ड्रॉप लेंगे, उसमें से हम लोग क्या क्या कितना क्वांटिटी अमाउंट ऑफ DNA निकाल सकते हैं. लाइक इन केस ऑफ लिक्विड ब्लड, we can have 2000 nanogram to 4000 nanogram per ml, or from blood stain we can obtain 250 nanogram per centimeter cube to 500 nanogram per centimeter cube. If we are having liquid semen, in that case we are getting 1,50,000 nanogram per ml to 3 lakh nanogram per ml sample, DNA sample I'm talking about. Even we can get the oral swabs are there, urine is there, blood tissue are there, different quantities of DNA we will be able to get. Like if we'll talk about the urine, we are getting 1 nanogram per ml to 20 nanogram per ml. Again I will repeat, for urine we will get 1 to 20 nanogram per ml. For अगर we will get a bone piece, या कभी वो भी हमें sample मिल सकता है, biological sample it is, from bone we will be able to get the
3 nanogram to 10 nanogram per ml के हिसाब से हमें वहाँ पे सैम्पल मिल जाता है. Even if we will talk about the blood, if we will have a drop of blood, it contains like 10 microliter. If we will talk about the whole blood, one drop of blood, it will be having 70,000 to 80,000 WBC cells. If the cell range of WBC cells in that blood is 70,000 to 80,000, then we will be able to get 500 nanogram of genomic DNA. अगर आप ड्रॉप एक ड्रॉप उठाएंगे, साइज ऑफ ए ड्रॉप, in that the size of the drop will include the 10 microliters of whole blood. If they are having the WBC cells 70,000 to 80,000, in that we will be able to get the yield of 500 nanogram genomic DNA. So different मतलब quantity of DNA we are able to get from different biological samples. So when we will extract this DNA, then we can store this DNA at minus 20 degrees centigrade for short term storage, for if we have to use this DNA within the months, or if we have to go for the complete long storage, that time we have to store this for we have to store this at the minus 80 degree centigrade. But before starting with the DNA, first we isolate. We in today's lecture we are going to study the DNA extraction process. But before starting with the DNA extraction process, we should be able to know what are the inhibitors, or what are the inhibitors which will hamper our polymerase chain reaction, or there are some enzymes which will degrade our DNAs. So whenever the extraction process for forensic DNA typing is done, we should avoid further degradation of DNA templates from inhibitors. So these inhibitors are different. Like in case of, if we are taking, mainly there are two inhibitors in forensic cases we are talking about. Okay, mainly there are two inhibitors which will inhibit our polymerase chain reaction. First is the protein hemoglobin, which will get from the blood. So first is the hemoglobin protein, and another is the indigo dyes. Another is the indigo dyes. Even if we talk about the hair sample, बालों का जो बाल जो हमारे रहते हैं, hair samples, melanin is the protein there which will inhibit our PCR reaction. So before starting our things, we have to be sure that we are able to remove these inhibitors before starting our reaction. Like what these inhibitors do actually, they bind these. It has been observed that these inhibitors bind the active site of tag polymerase, टैग डीएनए पॉलीमरेज. जो हमारा टैग मैन है, ये उसको क्या करता है, उसकी बाइंडिंग साइट पे ये एक्टिव, जो उसकी बाइंडिंग जो एक्टिव साइट है उसकी उस उधर जाके बाइंड हो जाता है. देन इट प्रिवेंट्स इट्स फंक्शन. तो पीसीआर एम्पलीफिकेशन प्रॉपर नहीं होता है. जो ये डीएनए है हमारा, as I said, inhibitors. So we discuss about them, but there are certain enzymatic and chemical processes which are involved in the DNA degradation process. Again, I will repeat, there are certain enzymatic and chemical processes which are involved in the DNA degradation processes. As if I will take an example of any organism die, okay, मर गया वो, the DNA molecule face some nuclear nucleases. जो हमारा डीएनए, हम मतलब इंसान मर गया, ठीक है, अब उसमें डीएनए है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो उसका जो डीएनए है, दिस डीएनए फेसेस सम nucleases. Like these nucleases will be secreted by bacteria, fungi, or even certain insects. So what the nucleases do, their main target is to cleave the hydrolytic or the glycosidic sugar base bond. What these nucleases do, they break down our or cleave our glycosidic base sugar bonds. So if this is the process, then this will lead to the single stranded nick. अगर ये हमारा जो ग्लाइकोसिडिक बेस शुगर बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, दिस विल अल्टीमेटली लीड टू द आवर सिंगल स्ट्रैंडेड निक. अगर एक से ज़्यादा यहाँ पे क्या हो गया, मतलब एक से ज़्यादा मतलब
breaks ho gaye, then we won't be able to get our complete PCR product. So it is necessary whenever we have to start with the process, we should be having sufficient DNA, which should not be in a broken form, and where we will be able to insert our forward and reverse primer for PCR reaction. Even sometime it has been observed when the PCR reaction is carrying out, there is a generation of heat and humidity. This heat and humidity speeds up the hydrolytic cleavage. अगेन वहाँ से क्या होता है, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होती है, जिसकी वजह से हमारा पीसीआर प्रोडक्ट बनता नहीं है. अगर ये पीसीआर प्रोडक्ट हमारा नहीं बना, जो हमारे डीएनए बैंड्स है वो अच्छे से नहीं बनेंगे, उसकी वजह से हम लोग फिर उसका एनालिसिस नहीं कर सकते. इवन डायरेक्टली समटाइम्स क्या होता है, हम लोग जो सैम्पल है हमारा उसको डायरेक्टली सनलाइट में रख देते हैं. Our natural sunlight contains the UV radiation that leads to the formation of thymine dimers. Again, that will be the problematic for our PCR reaction. So PCR products will not be formed properly. So we are having many different techniques, as you might have seen in the notes, that which were used for the DNA extraction method in case of forensic laboratories. So we are having like mostly there are three different techniques which are treated as the earlier techniques for DNA extraction. Like first is the organic extraction, second is the Chilex extraction, and the third one is the solid phase extraction or FTA or FTA. This all the three processes, all the three techniques depends which biological material you have to examine, from which biological material you have to go for the isolation of the DNA. So first we will be going through the organic extraction or phenol chloroform extraction. Organic extraction, or it's also called as phenol chloroform, as you all are well familiar with this extraction. This phenol chloroform extraction has been used for longest period of time. Longest period of time. Whenever we are dealing with the high molecular weight DNA, means genomic DNA, plus when this genomic DNA is applied with the when we have to use this genomic DNA for restriction fragment length polymorphism, that time the preferable extraction method is the organic extraction of DNA, like phenol chloroform method. But as we know that we are using phenol that is toxic to humans, nowadays these methods have been little modified by using some new chemicals. So in this phenol chloroform extraction method, we are adding series of chemicals. Like first we will take a biological sample. In that we will add sodium dodecyde sulfate, SDS, plus the proteinase K. What these proteinase K and SDS do, they break up the cell membrane, broke down the proteins. Then next step is the phenol chloroform extraction, phenol chloroform solution mixture is added. This separates the DNA from the proteins. Phenol chloroform क्या करता है? That separates our proteins from the DNA. Then the DNA isn't open up, so this DNA is soluble in the aqueous portion of the organic aqueous mixture. Then the unwanted proteins and the cell debris we can remove by getting the pellet. So हम लोग हमेशा aqueous phase लेते हैं ना, जहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा DNA होता है. So मतलब like there are many other things, like we are having what I will say, but like we are having many like different steps are there. So even incubation temperature varies or incubation period varies from sample to sample. So but in this case we are getting high molecular weight DNA. But at the same time, this is the time nowadays scientists have made such kits in which we will be able to get DNA extraction method in, we can complete DNA extraction method in in 3 to 4 hours. So this process is time consuming
and we are using certain hazardous chemicals. So we many times we have to transfer, like you might have observed in labs, we have to many times transfer one from one sample to another sample. So while transferring our sample to another test tube, sterile matlab append of tubes, there may lead to the contamination, or sometimes there will be risk of errors. So earlier it was used, but nowadays it's not used for the forensic studies. Now the second is our Chilex extraction. This is another alternate or inexpensive procedure for DNA extraction. What we do here, we take the sample, blood stain या semen लेते हैं उस what we do, we add chelating resin suspension. सैंपल उठाया, उसमें हमने क्या लिया, chelating resin suspension. This technique, जो ये हमारे पास ये टेक्निक है, this was introduced in 1991. This technique was introduced in 1991. सो इससे क्या होता है, जो ये चिलेक्स मेथड है ये बहुत तेज़ है. दिस इज मोर रैपिड एंड द ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन मेथड एंड दैन द ऑर्गेनिक, जो हमारा ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है, फिनोल क्लोरोफॉर्म. इफ वी विल कंपेयर द चिलेक्स एक्सट्रैक्शन मेथड विद द phenol chloroform method, so this technique is more rapid. If we will talk about what is chilex, chilex is a matlab polymer type, copolymer exactly, actually composed of styrene divinyl benzene. Chilex is composed of styrene divinyl benzene copolymer. It can paired with the immunodiacetyl ions that act as a chelating group in binding polyvalent metals such as magnesium. ये क्या करते हैं, जो ये हमारे को पॉलीमर है ना, इट मीन्स दे आर हैविंग टू कंपोनेंट्स. ये क्या बनाते हैं, पॉलीवेलेंट मतलब आयंस बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम. सो इवन ऐसा कहा जाता है व्हेन मैग्नीशियम आयंस आर ड्रॉन इन, जब मैग्नीशियम आयन डाला जाता है एंड इट गेट बाउंड विद द रेजिन, जब मैग्नीशियम आयंस को निकाला जाता है, then DNA destroying nuclear enzymes are inactivated. So DNA is protected. ये क्या करते हैं, जब इस रेजिन को डाला जाता है इसमें, ये DNA को बचाता है किससे, ये जो मतलब जो DNA को ये करते हैं ना, मतलब न्यूक्लियर एंजाइम जो DNA को ब्रेक करते हैं, ये उसके साथ बाइंड हो जाता है. जो रेजिन हम लोग जो डालते हैं ना, ये क्या चिलेक्स जो हम लोग इसमें डालते हैं, सैंपल में डालते हैं, जो DNA को ब्रेकिंग, जो न्यूक्लियसेस DNA को ब्रेक करते, ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो DNA है वो क्या हो जाता है, वो बच जाता है. सो द प्रोटोकॉल इज़ लाइक दिस. हम लोग ब्लड स्टेन लेंगे, ठीक, देन वी एड द 5% चिलेक्स सस्पेंशन. चिलेक्स का सस्पेंशन हम लोगों ने डाला, डैट इज़ द कोपॉलीमर. देन वी अलाउ इट टू बॉयल फॉर सेवरल मिनट्स. हम लोग इसको बॉइलिंग के लिए रख देते हैं, सो डैट द सेल वॉल इज दिस, ऑल द कंटेंट्स विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल विल गेट ब्रोकन डाउन, मतलब ओपन अप हो जाता है. देन ऑब्वियसली देयर इज रिलीज ऑफ DNA. सो देयर आर मेनी वॉशिंग स्टेप्स विच विल बी एबल टू रिमूव कंटामिनेंट्स और द इनहिबिटर्स लाइक हीम और अदर प्रोटीन्स जो हमारे इस सेल में है. और हम लोग इसका जो टेम्परेचर है ना, किसका जो हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर, that we expose up to the 100 degree centigrade. At 100 degree centigrade, we all know our DNA will get denatured. This will denature our DNA. But ये हमारी जो सेल जो प्रोटीन्स है या हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसको पूरा completely डिसरप्ट करते हैं. हमारा DNA सिर्फ डिनेचर हो जाता है, that can renature again. But the plus point of this raising the temperature up to 100 degrees centigrade is to disrupt the whole cell membrane, including destroying all the proteins which are there. Then what we do, we मतलब वहाँ पे already raisins है, चिलेक्स है वहाँ पे, तो आफ्टर क्विक स्पिन मतलब सेंट्रीफ्यूज करते हैं, चिलेक्स रेजिन एंड सेल डेब्रीज जो है हमारे वो बॉटम में आ जाती है, और जो हमारा सुपरनेटेंट है
उसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं for the PCR reaction. As in your notes, you can see on page number 32 what we do in the second. There is a second column for Chilex. What we do, we take the blood stain, then we add the water. फिर इसको क्या करते हैं, incubate करते हैं at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर रिमूव करते हैं सुपरनेटेंट, या तो फिर दूसरा प्रोसीजर जो यहाँ पे दिया गया है डायग्राम में, लाइक ब्लड स्टेन लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, इंक्यूबेट करता है सिंपली, देन सेंट्रीफ्यूज। सुपरनेटेंट जो हमारा जो होता है ना, हीम या वगैरह जो हमारे ये होता है, उसके लिए प्रोसेस किया जाता है। सुपरनेटेंट को रिमूव किया जाता है क्योंकि जो हमारा कलरिंग ग्रुप है या कुछ डाई है वो सुपरनेटेंट में आ जाता है। फिर जो ये हमारा सैंपल है, इसको सैंपल को हम लोग 5% चिलेक्स ऐड करते हैं। Then incubate depends on the our sample. We can incubate this sample at 56 degrees centigrade or we can incubate it at 100 degree centigrade, depends sample. फिर जब हम लोगों ने क्या किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया, फिर अगेन सेंट्रीफ्यूज किया, जो हमारी सेल डेब्रीज है वहाँ की जो है वो रेजिन के साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, बाइंड हो जाती है, और वो हेवी हो जाती है ड्यू मॉलिक्यूलर वेट उनका, ड्यू टू द सेंट्रीफिकेशन दीज फॉर्म द पैलेट एंड बट द DNA विच इज़ इन डिनेचुरल फॉर्म को मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड, वो हमारा सुपरनेटेंट इसमें ही रहता है। देन फिर जब इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं, हमारा जो DNA सैंपल है वो रिनेचर हो जाता है, वापस अपनी कन्फर्मेशन में आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इस सुपरनेटेंट को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर द we can directly use for our PCR product. This was about the Chilex extraction method. So another is the FDA paper. Another is the FDA paper. जो ये हमारा FDA paper है, this was introduced in late 80s. This was introduced in late 80s and this FDA paper as paper चुना बनानी, it means ये कुछ paper बनता होगा. We will study this. अभी ये हमारा सेल्यूलोज फिल्टर पेपर होता है एक्चुअली. सो दिस पेपर FDA फिल्टर पेपर वॉज डेवलप्ड बाय ली बर्ग्योनी एट फिल्डर्स यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया. लेट 80s में ये बनाया गया है बाय ली बोरेंगनी एट फिनलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया. सो जो ये हमारा FD है, ये जो FDA है, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर फिट्सको फ्लेंडर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट. इट स्टैंड्स फॉर फिट्सको स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट. जो ये हमारा है, ये एक पेपर है, एब्जॉर्बेंट सेल्यूलोज पेपर. दिस इज और सिंपली जैसे हमारी पैराफिन फिल्म होती है ना, वैसा ही हमारा ये एक सेल्यूलोज बेस्ड है, लेकिन इस सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज पे पानी डालेंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, बट दिस इज द हैविंग एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द थिंग्स. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड, इट्स मतलब लाइक ये पेपर स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए, एब्जॉर्बेंट सेल्यूलोज बेस्ड पेपर. दिस पेपर जो ये है, इसमें 4 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा DNA प्रोटेक्ट होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस डिग्रेडिंग एंजाइम्स. और जो ये हमारा पेपर है, दिस पेपर डजेंट अलाउ टू ग्रो बैक्टीरिया ऑन इट. मीन्स जब हम लोग इस पेपर पे ब्लड स्टेन डालते हैं, फिर हम इसको एयर ड्राई करते हैं, एयर ड्राई ऐसा हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम जो बैक्टीरिया है वहाँ पे कभी ग्रो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस पेपर में क्या होता है, इसकी एक एबिलिटी है, दिस पेपर इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर and it has been observed while storing our blood sample onto this paper. It has been observed that the जो हमारा sample है that can be preserved for years together. It has been observed मतलब scientifically ये देखा गया कि several years तक हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ये देख सकते हैं. लेकिन जो हमारे ये है ना FDA एंड जो हमारे कमर्शियल पेपर्स है, ऐसा देखा गया है कि मतलब कुछ महीनों के बाद उसमें थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है. जो हमारी शॉर्ट टेंडम रिपीट्स है, कुछ ऐसा देखा गया है कि मतलब उतना भी स्टेबल नहीं रहता है जितना क्लेम करती है कंपनी. शॉर्ट टेंडम रिपीट्स STR जो हमारे, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन ऑब्जर्व की गई है आफ्टर 19 months. सो वट हाउ वी यूज़ दिस FDA पेपर जो हमारा है, डैट इज़ कम्पोज ऑफ एब्जॉर्बेंट सेल्यूलोज बेस्ड पेपर. हम लोग हमारा ब्लड सैंपल इस पे लेते हैं, इसको ड्राई करते हैं,
देन जो ये हम लोग ड्राई करते हैं, अगर हमें इसके लिए सैम्पलिंग करना है, जैसे हमें डीएनए एक्सट्रैक्शन करना है, अभी हमारा प्रिजर्व हो गया सैम्पल इस पर, देन वी टेक दिस पेपर। सो इसमें क्या हुआ, जो हमारा ये है ना वाइट ब्लड सेल्स आरबीसी जो भी है वो इमोबलाइज हो गए इसके मैट्रिक्स के ऊपर। फिर हम लोग इसमें से स्मॉल मतलब छोटा सा एक पीस, मतलब समझो कि कट करते हैं। फिर इस पेपर को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग फिर इसको ट्यूब में डालते हैं जहाँ पे हम लोगों की इसकी एक्सट्रैक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल हमने ये एफटी पेपर लिया, स्क्वायर है, बड़ा है, तो इसका हम छोटा सा हिस्सा लेंगे जहाँ से हम लोग डीएनए एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इसको सिंपली हम लोग कहाँ डालेंगे, वॉशिंग के लिए डालेंगे। लेकिन इसमें एक एबिलिटी है, इस जो ये हमारा एफटीए पेपर इज हैविंग एबिलिटी, इट बाइंड्स डीएनए स्ट्रांगली ऑन इट्स मेम्ब्रेन। मीन जो इसका मैट्रिक्स है वहाँ पर डीएनए बाइंड हो जाता है। और इसमें हम लोग ऐसे वॉशिंग सॉल्यूशंस डालते हैं जिसकी वजह से जो हमारे सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ना बाकी नेबर मतलब लगित आसान सु सोरे रिमूव गसान, ठीक है। जो हमारे एफटीए पेपर है, this paper is having ability to bind DNA strongly on its matrix, and the other components of the cell are not that much firmly attached to this paper. While washing, we are able to remove all the impurities, or we can say we can remove all the unwanted material from it. Then even we can remove heme and other inhibitors which are inhibiting our PCR reaction. जो ये हमारी एफ टी ए पेपर है, वी कैन मतलब दिस पेपर कैन बी यूज फॉर स्लाइवा और बकल सेल्स के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। Even how we will be able to observe that we have transferred our sample onto this FDA paper. There is a one indicator present on the paper whenever we are adding any liquid, or when the liquid is coming contact with this FDA paper, there is a color change. There is a color change. By observing, by visualizing the color of this FDA paper, we will be able to get confirmation that if the buccal swab has been transferred from our this cotton swab onto the FDA paper. Technology has not been much discussed. If we will see the on page number 32, the diagram which is given to you, again you will see the whole procedure what is there. So these were the earlier techniques which were discussed, but nowadays they have another different extraction method which have been used for this DNA fingerprinting, but I think we will not discuss it today.